Hello viewers, welcome to My India, a show that brings the latest updates about India's rich culture, ethnic diversity and growing economy. I'm your host Abha. Yoga forms part of the most ancient cultural heritage of India. The International Yoga Festival offers a harmonic blend of traditional yoga and vivid spiritual tendencies of the world. The festival includes classes, workshops and spiritual discourses conducted by renowned yoga teachers and artists from across the world. With the picturesque backdrop of towering Himalayan peaks and the mighty rivers like the Ganges, Yamuna, Bhagirathi and Alaknanda flowing through the region, Uttarakhand has the appearance of a divine abode. The 17th International Yoga Festival, held recently in Rishikesh city of the northern state of Uttarakhand, attracted hundreds of yoga enthusiasts from more than 70 countries. The city lies in the foothill of the great Shivalik mountain range that exudes an inherent charm of spirituality. People are participating in this festival with one motive only: how they can find inner peace. People, when they go outside Switzerland or any other nation for tourism purpose, first thing they ask, can I have a Wi-Fi there? And people come not for Wi-Fi here. People come, why I am here on this earth? What is my purpose? And that's what is being served and given and shared by all the divine teachers have come from almost 80 nations. 150 classes are taking place, 70 presenters are there, more than 25 countries, and it all looks like a one family. Yoga is associated with the ancient culture and heritage of India. It is believed that yoga originated in India about 5,000 years ago. In Sanskrit, yoga means to unite and describes a way to live a healthy life. Ao divulgar o yoga, estamos divulgando a cultura indiana para todo mundo. And for sure, when we promote yoga, we also promote Indian culture to everyone. Na raiz do yoga está a possibilidade de encontrar aquilo que todo ser humano busca. In the roots of yoga, there is the possibility of finding that which every human being seeks for. Felicidade. Which is happiness. Todo ser humano está em busca de felicidade. Every human being is seeking for happiness. O yoga é o caminho para encontrar a felicidade. Yoga is the path to find happiness. Onde a felicidade não há violência. Where there is happiness, there is no violence. The festival was held with the aim to promote an all-embracing way of life through the means of yoga. It is pertinent to all people irrespective of their caste, creed, sex and religion. To me, life is yoga and yoga is life. The yoga festival is not mere festival of yoga, it's a festival of life. How life can become festival. That's the main purpose behind this, to bringing all the people together from all over the world, from all religions, from all walks of life. And to me, this is true yoga, and yoga is union. And this oneness is needed today in the whole world. By practicing yoga, the mind is disciplined through meditation and the body is aligned and strengthened. Spiritual discourses on philosophy and meditation were held by revered spiritual leaders from India and abroad. Is actually introducing yoga in the most broad way for people from every walk of life, different capabilities and so on. Also added to this, we have brought here Jnana Yoga, which is yoga of understanding, which brings people back to the direct experience of their inmost nature. And also by opening the doors to so many people from so many different countries to this wonderful event that happens once a year, is a beautiful way to share that heritage, to share that culture, which is not only Indian but belongs to all of us, because there's no really separations, there's no boundaries. There's only different names for countries, but we're all just one, we're humans. In the evening, the participants enjoyed a special session on Sanskrit chants and other sacred rituals that were performed on the banks of the Ganges river.
Because on the banks of Ganga, in the lap of the Himalayas, in the land where the sages and the saints and the rishis have been doing their meditation and yoga for thousands of years, yoga is in the air. It's not just what we do on the mat. It's every minute and every moment off the mat. It's the air we're breathing, the water we're drinking, the divine Ganga Aarti they're taking part of in the evening, all of the darshan and the satsang with the revered saints, and it's being. Yoga is indeed an integral part of Indian culture that has benefited the life of the people living across the world. India is a spiritual land where people enjoy diversity with utmost zeal and enthusiasm. One such example is seen at the shrine of Baba Ghulam Shah, where people send a message of unity, peace and harmony among countrymen. People from different communities visit Shahdra Sharif, shrine of Baba Ghulam Shah Padsha. Faith and harmony can be felt in every nook and corner of the shrine as devotees pay their respects to the Sufi saint. Walking through the sloping stairs has never been an obstacle for the believers to mark their presence at the revered shrine. और यहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे दूसरे जो भी हिंदू मुस्लिम सिख है जो भी यहाँ पे आएंगे इक्वली यहाँ बैठेंगे लंगर में, कोई स्पेशली किसी के लिए अलग से कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सब बैठेंगे इक्वली बैठेंगे, हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा सब इक्वली बैठ के खाएंगे पिएंगे, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, जिससे हमारे अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग्स डेवलप होती हैं और हम लोग काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। मैं बस इस जगह के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग यहाँ आते हैं। जो भी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, यहाँ आकर सारा इलाज सब कुछ ठीक हो जाता है। बीमारी से बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी से इलाज होने वाला बंदा भी यहाँ आकर इलाज में आ जाता है। Built in 19th century, Shahdra Sharif is close to a beautiful hill standing atop Thana Mandi. The shrine looks astonishing amidst beautiful mountains and a clean stream flowing near it. Shahdra Sharif is constructed in Kashmiri style with its exterior built in Multani architecture. यहाँ पे घूमने के लिए शाहदरा शरीफ में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फैमिली के साथ और हर मज़हब के लोगों को देखकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी प्रोग्राम इंतज़ाम है। इस जगह से अमन शांति का एक पैगाम जाता है हम लोगों के कि मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये जो आलमपना फैज़पना यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब हैं, इनकी ज़ियारत में ये फैज़पना ज़ियारत है। दूर दराज से लोग आते हैं, थ्रू आउट इंडिया से आते हैं। हमने यहाँ देखे हर मज़हब के लोग आते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से यहाँ जो होता है माहौल यहाँ का जो है अमन अमान का माहौल है, रूहानियत का फ़िज़ा है, बहुत दिल लुभाता है इधर आने से। Devotees of all age groups pay a visit to the Dargah and spread the message of harmony and peace among people. Sada Bahar, a famous tree near the shrine, bears fruits all round the year. These fruits can be stored for long periods without refrigeration. A langar is held at Ziyarat, which serves thousands of devotees every day. मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का आना जाना, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों का आना जाना रहता है, तो 24 घंटे यहाँ पर लंगर भी रहता है और यहाँ पर रहने की सहूलियात भी है। तो जहाँ तक हमारे यहाँ हर मज़हब के लोगों का आने का जो ताल्लुक़ है, उस हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ से एक अमन का माहौल जो है और लोगों को यहाँ से अमन, भाईचारा और इन सारी चीज़ों को भी जो है यहाँ से जो है वो पैगाम जो है वो लेकर के जाते हैं। Raising hands with moist eyes, devotees ask for forgiveness and seek blessings from the saint. और मैं बहुत बचपन से सुन के आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कहीं डॉक्टर से ठीक नहीं होते हैं वो यहाँ आके ठीक होते हैं। यहाँ बहुत अमन शांति है, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे आते हैं, तो एक अच्छा मैसेज आता है यूथ के लिए कि यहाँ पे आएँ, इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहने में ही भलाई है। Such places promote peace,
harmony and unity among people of different faiths. With initiatives like Make in India and Digital India, the Indian economy is on a robust growth trajectory. A lot of emphasis has been given to boost the country's economy. Let's look at some recent developments. India's sale of a 5% stake in top power producer NTPC Limited received bids for 80% more shares than were on offer for institutional investors, setting the government on course to raise about $730 million. Indian insurers alone bid for 30% more stock than was on sale in the biggest share offering in the Indian market this year. Japan's All Nippon Airlines has started Tastes of Japan to introduce Japanese ingredients all over the world. In this project, various cuisines and traditions of each prefecture are introduced. Kyoto is famous for shimeji mushroom, which is artificially cultivated in the factories here. The cultivation of shimeji mushroom seemed to be difficult, but biotechnology helped by Takara Bio enables the cultivation artificially. Water, wind and solar are the major sources of power. In Japan, emphasis is given on earth thermal energy. Exhaustion of CO2 is less and it is enclosed. It excludes environment pollution of the earth. It is regarded effective for Asian countries which have hot climate. こちらの地中熱ヒートポンプ暖冷房システムは再生可能エネルギーである地中の熱を利用して冷房と暖房を行うシステムです。 Union Budget 2016-17 was recently presented in the Parliament, giving an impetus to the economic growth in the country. Finance Minister allocated a sum of $8 billion for building roads and highways for easy movement of goods and services. The Finance Ministry also proposed to significantly relax the FDI policy in several sectors. We present you a report on the Budget 2016-17. In order to give a further push to Asia's third largest economy, Finance Minister Arun Jaitley unveiled a budget which aims at reviving rural economy. The government has also proposed to double the farmers' income in the next 5 years. Allocation for rural sector is $12.83 billion. Allocation for agriculture is $5.26 billion. Allocation under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana increased to $2.77 billion. A sum of $5.69 billion allocated for Manrega, 100% village electrification by May 2018. Agricultural credit target of $131.59 billion. Prime Minister Narendra Modi hailed the budget that seeks to sustain growth against a grim global backdrop. गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। Finance Minister Arun Jaitley has also proposed to significantly relax the FDI policy in several sectors, including insurance and pension, and asset reconstruction companies to attract more overseas investments. In the budget, the government also proposed that 60% of withdrawal on contribution to the Employee Provident Fund PF made after April 1 this year will be subject to tax, drawing criticism from political parties and employees. The government has decided to impose tax at the time of withdrawal on 60% of the contributions made after April 1, 2016. At present, social security schemes run by retirement fund body EPFO are tax-free. कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है पीपीएफ है उस पे ये जो नया टैक्स का स्कीम है लागू नहीं होगा, वो इसके दायरे के बाहर है। तो जो लोग पीपीएफ में हैं उन लोगों को इस बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग नया स्कीम ला रहे हैं वो ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड और एनपीएस के लिए लागू होगा और इसमें भी ये सिर्फ
गोइंग फॉरवर्ड यानी कि भविष्य के लिए होगा, जो आपने पहले किया है उस पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा। सिर्फ भविष्य में जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। Union Budget 2016-17 marked a strategic shift by addressing rural distress in a country of 1.3 billion, where 2/5 of families rely on farming and are reeling from 2 years of drought. India, a bright spot in a gloomy global landscape, eyes a growth rate of 7.6% in the fiscal year that is drawing to a close. India is home to different communities who have been living in peace and harmony for centuries. In Mullapur Dakha town, located in Ludhiana district of Punjab, people of different religious backgrounds participated in the inauguration ceremony of a temple. Punjab is famous for its holy places, traditions and rituals. The scenic landscape, rich history and famous religious sites draw people of all faiths to the state. A classical example of religious unity and harmony was witnessed in Mullapur Dhaka town of Ludhiana district of Punjab, where people from different communities participated in the installation ceremony of Sai Baba's temple. यहाँ पर अभी जो साईं बाबा का मंदिर बना है, तो इसमें जिस तरह के लोग हाजिर हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी तरह के लोग हाजिर हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि पंजाब में जो धार्मिक भाईचारा है वो पूरा दुरुस्त है और पूरी अच्छी तरह से सभी लोग एक दूसरे के ज़रूरतों में, एक दूसरे के सुख दुख में मिल बांट करके आपस में खुशी मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जो साईं का दरबार बना, मंदिर बना, यहाँ पर हम सब हिंदू सिख सब भाई भाई रहते हैं इकट्ठे। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी मंदिर बन रहा है इसमें सारे हम इकट्ठे होकर साथ दे रहे हैं। हिंदू भी है, सिख भी है, सारा ईसाई भाईचारा सब है। ये हमारा मंदिर साझे तौर पे बन रहा है और मुल्लापुर में पहली बार एक बना, दूर दूर तक कोई नहीं है। हमको यहाँ से साईं के दर्शन करने के लिए लुधियाना में मलकपुर के यहाँ जाना पड़ता था। अब हमारी साईं का मंदिर यहाँ तैयार हो गया, तैयार होने वाला इसका मुहूर्त है। हम आप बहुत खुश है हमारा। Special prayers and rituals were performed to pay respects to the deity. Later, the spiritual idol was installed at the Sanctum Sanctorum, where people paid obeisance and sought blessings. यहाँ साईं बाबा का मंदिर बना है और बहुत ही अच्छा माहौल है। मतलब सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए हैं यहाँ पे। ये इसीलिए ये मंदिर बनवाया गया भी सब इकट्ठा रहे, कोई जाति पाति का भेदभाव ना हो। ये जो हमारी धरती है हिंदुस्तान की, जिसमें पंजाब स्टेट है, ये सारे हम लोग जो भी है सारे धर्मों के इकट्ठे होकर हर धर्म को मनाते हैं। जैसे कि कोई भी धर्म का हो, आज सब जाति धर्म के यहाँ मत्था टेकने के लिए, हमारे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा। बड़े अच्छे किस्मत वाले हम लोग जो पंजाब में इस धरती पैदा हुए हैं, जहाँ किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है, सब एकजुट से मनाते हैं। सब धर्मों में बड़ा इकट्ठ होता है, जैसे ही आज हो रहा है। Sai Baba, also known as Shirdi Sai Baba, is an Indian spiritual master who is worshipped by people around the world. He had no love for perishable things and preached about love, forgiveness, helping others, charity and inner peace. सभी धर्मों का सभी लोग सत्कार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग आते हैं, क्योंकि साईं धाम के दर्शनों के लिए पंजाब से हजारों लोग वहाँ जाते हैं महाराष्ट्र में। और जो हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी पहरावे, सभी भाषाएं होती हुई, और जो भारत की एक परंपरा है, भारत की एक वक्री पहचान है। India is a spiritual land where people of all faiths respect each other's beliefs. India is one of the major fish producers in the world and accounts for nearly 6% of the global fish production. There is an increasing need to protect the marine environment. Several companies across the globe are launching new products in an effort to preserve the aquatic life. Japanese scientists have introduced an aeration device at a shrimp farm in Thailand.
The device generates fine bubbles which is called micro-nano bubbles that drift in the water and easily dissolve oxygen into the water. 魚の養殖場とか、それからエビの養殖場っていうのはですね、夜に酸素濃度が下がるんです。夜中に植物酸がどんどん酸素を消費してしまうので、そうすると魚とかエビがですね、苦しくなってくるんですよ。じゃあそれをなんとかすれば、助けてやればですね、生存率が良くなるね、成長率も良くなるんですよ。ということは生産効率が良くなるので、そういう養殖漁業にはですね、非常に画期的な装置として、これ使えるんじゃないかということで開発してきたんですね。Inquiries about this device are coming not only from Thailand but also from Vietnam, Indonesia and Malaysia as well. A Japanese company has asked for partners in Vietnam to grow different kinds of vegetables. The vegetables are cooked there and sent to Japan. 私どもユニフーズ株式会社は設立してもう17年で、最初から冷凍野菜の専門メーカーという位置づけで、工場を持たないメーカーという位置づけで海外から輸入して日本のお客さんに販売しているという冷凍野菜の専門メーカーなんです。 Marine fisheries in India contribute to food security and provide direct employment to millions of fishermen, besides others who are indirectly dependent on the sector. With the help of innovative technology, India can give a boost to the sector. Today we bring you scrumptious Hyderabadi dum biryani, known for its rich and tempting flavor, which will tickle your taste bud and leave you wanting for more. Hyderabadi dum biryani is famous across the globe, known as the face of rich Hyderabadi culture. The traditional dish is prepared with mutton or chicken marinated for some time and cooked before being layered with rice in a duff-sealed vessel. Half-boiled rice layered with oil, mint, cooked mutton, sealed with duff and slow-cooked dum style helps to produce rich flavors and a meal loved by one and all. People from different parts of country taste the spicy flavored mouth-watering dish in the Hyderabad city. I am a big fan of biryani. Right, there are a couple of different types of biryani in the world. Even in Hyderabad, in India, you will find so many different kind of biryanis. But the Hyderabadi dum biryani is the best biryani anyone can cook. See, we are so much foodies, so we would love to eat biryani. We go to marriage functions just to have Hyderabadi biryani. Biryani is considered to be a dish of Indian origin and is more prominently considered to be the dish of Nizam, ruler of the state of Deccan. Hyderabadi biryani originated after blending of Mughlai and Iranian cuisine in kitchens of the Nizam. Some of the ingredients used in preparation of mouth-watering traditional dum biryani are chopped meat, salt, soft powder, cumin, butter, turmeric powder, cinnamon, ginger and garlic paste, red chili powder, brown onions, curd, coriander, rice, and saffron mixed with hot water. The traditional dish is known for its delicate and marvelous taste, preferred by almost every age group. ये है पूरे हिंदुस्तान के लिए यहाँ की बिरयानी तो मशहूर है और वर्ल्ड लेवल पे भी यहाँ की बिरयानी के बहुत चर्चे होते हैं। यहाँ पे छोटा फंक्शन है या बड़ा है हर घर में बिरयानी की दावत से इनवाइट किया जाता है। और हैदराबाद दक्कन बहुत सारे चीज़ों के लिए मशहूर है, जिस तरह से चारमीनार है और शेरवानी है और बिरयानी है। जहाँ तक हैदराबादी बिरयानी का ताल्लुक़ है, ये खाने का एक ऐसा आइटम है जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर अगर कोई चीज़ है तो वो है हैदराबादी बिरयानी। वो इसलिए कि इसका मज़ा के बग़ैर दावत मुकम्मल नहीं होती। चाहे कोई दावत हो, बर्थडे की पार्टी हो या शादी हो या कोई और तकरीब हो, और किसी भी फ़िरक़े के लिए, किसी भी मज़हब के लोगों के लिए बिरयानी के बग़ैर, हैदराबादी बिरयानी के बग़ैर दावत नामुकम्मल होती है। The taste bud affirms rich quality flavors of the classic dish when it melts in the mouth. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@anin.com. In the next episode, we will come up with some more latest news about India's diversity and its economy.
signing off with a look at vintage car rally that was held recently in capital city New Delhi.